I want you to imagine two different versions of yourself. एक version who wakes up in the morning and सुबह उठते ही he scrolls on some reels. He's still in the bed, he's still on the bed, and रजाई वजाई अभी भी ऊपर ही है. Now you pick your phone up and you scroll on some reels. You go to Instagram as an excuse to let's see what's going on in the world. Let's see what's going on in the friend circle, right? And then you check कुछ लोगों की stories check करते हो, रीलें देखते हो. Then you go to YouTube, do the same thing. Then you go to Instagram. You just fluctuate between two, three apps for about an hour and a half, right? और उसके बीच में भी तुम थोड़ा सा वापस झपकियाँ भी ले रहे हो, थोड़ा सा सो रहे हो, थोड़ा सा उठ रहे हो, जाग रहे हो. You're confused what you are doing, but you are doing something with the phone and with sleep. Then you finally wake up, and let's say it's the weekend, right? It's the weekend. You wake up at about 8 o'clock, 9 o'clock, finally तुम बेड से उठते हो. Tell me, what is the possible next thing that you're about to do? Is it something productive or is it something that's very unproductive? It's very likely कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मतलब अपना बेसिकली टाइम वेस्ट करने के बाद you would do something unproductive. वैसे तो practically speaking तुम पेट खाली करोगे. But after that, when you have had such a bad start to the day, जिसमें already तुमने एक चीज़ करके जिससे तुमने अपने आप को एक लॉस दे दिया, एक it's almost as if you lost a battle. Now you will keep that momentum up and keep on losing the next few battles throughout the day. See, the most difficult thing about doing anything is to start. अगर तुम एक दिन को with a strong motive start कर दो, कुछ specific laid out चीज़ों के साथ, you'll call that a morning routine, right? But it helps you so much throughout the day, and it's not about doing the productive things. कि तुमने एंड्रयू ह्यूबरमैन का पॉडकास्ट देख के सनलाइट की तरफ देख दिया, सनराइज की तरफ देख लिया सुबह सुबह. You did some meditation, did some puja, did some exercise. All that stuff is good. But what the main thing that helps it with is कि इसके आगे तुम्हारे पास वो momentum carry on होता है. Because you have already won in the first, like the absolute earliest part of the day. You've already had some few wins. You did the meditation even if you didn't feel like it. You went out in the garden and did some exercise even if you didn't feel like it. तो तुमने कुछ wins कर लिए already. You'll carry that momentum forward, and throughout the day, अब मान लो इसके बाद तुमने खाना खा के कुछ काम करना है, you will carry that momentum and do the work easily. क्योंकि you have the momentum of winning. When you win once, win twice, it's very likely that you're going to win another time because you have that momentum. When you lose once, lose twice, it's very likely that you might also lose again because you have that momentum. Momentum is like, imagine एक क्लिफ पे एक नॉट क्लिफ बट लाइक माउंटेन पे स्नोबॉल रोल करते हुए जा रही है, छोटी सी स्नोबॉल, बट जितना ज़्यादा वो रोल करेगी उतना ज़्यादा स्नो उससे अटैच होएगी, एंड वो जितना ज़्यादा रोल करेगी उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी. That's exactly what momentum is like. When you do something great to start the day with, you will have that same momentum which will allow you to win the battles in your work or in your studies or whatever it may be. It's also a very good tactic to just kill the laziness from the start, especially in the winters, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादा मन करता है कि बस रजाई के अंदर बैठे रहो, सो जाओ बस बढ़िया से, 1 घंटा और सो जाओ, आधा घंटा और सो जाओ, 10 मिनट और सो जाओ. But if you can kill that lazy part of your brain that's telling you, suggesting you that at the absolute start of the day, it's very likely it's not going to have the chance to come up again. Of course, वैसे बाद में सोच में तो आएगा ही कि यार थोड़ा सा और सो जाते हैं, थोड़ा सा ये काम नहीं करना बाद में करेंगे, वो वाले थॉट्स तो फिर भी आएंगे. बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीटन दैट काइंड ऑफ अ थॉट वंस, कि 6 बजे अलार्म बजा और उठ गए, मन नहीं कर रहा उठने का फिर भी उठ गए. That's exactly what happened with me today. मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मन था रजाई में सोने का, बट आई वोक अप एनीवेज क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा काम है आज करने को. If you can kill that, like already hit that lazy part of your brain, imagine it's like this kind of a person जो मतलब सारे लेजी नेगेटिव आइडिया सजेस्ट करता है. अगर तुमने सुबह उठते ही अलार्म सुनते ही उसको एक चाटा मार दिया, he won't speak as much as he could. अगर तुम एक इंसान को चाटा मार दो बदतमीजी करने के लिए, वो वापस बदतमीजी करेगा बार बार.
शायद कर दे, बट इतना भी नहीं करेगा जितना वो नॉर्मली करता. जस्ट लाइक दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो तुम्हें बार बार कह रहा है यार थोड़ा सो और सो जाते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं. इफ यू कैन हिट इट इन द मॉर्निंग कि नहीं, मैं नहीं सो रहा, आई एम गोइंग टू गेट अप, आई एम गोइंग टू डू द मॉर्निंग रूटीन, then it will have lesser and lesser chance to pop up once again जब तुम अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो throughout the day. Of course it will pop up again. We are humans, it is a natural instinct, and right now in us, the amygdala stuff, that's basically the negative part of your brain. But it will hit you again. But it's important that you hit it back. And अगर तुमने सुबह सुबह already hit कर दिया, you will carry that momentum forward and be you'll have multiple wins throughout the day against that negative part of your brain, right? And of course it gives you a early win in the morning. You've already won against tiredness and laziness. You've already won a battle against something which was stopping you from doing all this. तुमने सुबह उठते ही जल्दी उठे, 6 बजे 5 बजे उठे, you did the morning routine, you did the same stuff that you do every single day, the exercise, the staring into the sunrise, the meditation, the puja. When you do all that stuff, the cold showers, when you do all that stuff in the morning itself, what it gives you, it's an early win. It's an early achievement in the day कि वाओ मैंने सब कुछ कर लिया, ये सारी प्रोडक्टिव चीज़ें कर ली. You'll carry that win forward, you'll carry that momentum forward कि धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाई भी कर ली, फोकस के साथ कर ली, just like how I did the meditation this morning. So you carry that momentum forward throughout the day. It's not कि तुमने ये कर लिया, अब now the day itself जब तुम्हें काम करना है, it is a completely separate thing. No, you carry that momentum forward just like the snowball increases in size as it rolls down the cliff. I hope that's what you call a cliff. The mountain basically. Of course, it's also including you doing the good stuff. Of course, I'm not ignoring that ki having a morning routine, waking up early in the morning is also really good for your mind and your body. You're waking up, staring into the sunrise, doing the meditation, exercising. All that stuff is also very good for your body, and I'm not ignoring it. But because I'm talking about momentum in this video, I am underlining momentum even more, highlighting momentum even more. The momentum that you carry on from a good morning routine is a lot much better. Like, you can think for yourself, man. You can think for yourself. तुम सुबह उठ के रीलें देख रहे हो, बेड पे पड़े हुए हो, फिर थोड़ी देर में उठते हो, फ्रेश होके आते हो, खैर यू आर स्टिल वेरी ग्रॉगी एंड क्वाइट गॉबलिन लाइक, थोड़ा सा और सो जाते हो बेड पे आके, फिर थोड़ा सा और फ़ोन देख लेते हो, मम्मी डांट रही है नहा के आजा बेशरम. Then you finally after some time सोते और फ़ोन देखते सोते फ़ोन देखते finally at 9 o'clock 9:30 you go and take a bath, come back, and a lot of the times people don't even take a bath. Forget that, man. Brush करके खाना खाओ यार. They'll take the bath in the evening. Specifically in सर्दियों में तो delay ही हो जाता है evening तक. Doesn't it happen? You've already started the day with such a loss, such a groggy and goblin-like feeling that you're gonna carry that momentum forward and be a goblin throughout the day. Be that kind of like liched personality throughout the day. Start the day with a win. Start the day with a morning routine and the same morning routine, because that allows your mind to अंडरस्टैंड कि अच्छा अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मॉर्निंग वाली, अब मैं सनराइज पे देख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मीन्स इट्स टाइम कि सुबह हो गई है, जागो. इट्स लाइक इट बिकम्स लाइक अ ट्रिगर फॉर योर बॉडी कि अच्छा अब हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम सुबह करते हैं, तो मतलब सुबह हो गई है. बिकॉज ऑफकोर्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डोंट हैव आइज, right? They can rely on eyes, but they don't have their own eyes. But when you start doing the stuff that you do in the morning, your body will naturally give you more energy to use. And इसी वजह से नाइट रूटीन भी सजेस्टेड होता है, बट बिकॉज मैंने नाइट रूटीन खुद अभी यूज़ नहीं करा इतना ज़्यादा, इसलिए मैं अभी तुम्हें भी नहीं कर रहा, अभी तुम्हें भी नहीं बता रहा. बट मेन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इज द मॉर्निंग रूटीन. बढ़िया से 7-8 घंटे नींद लो. इनफैक्ट 7-8 घंटे भी कम है, 8 से 9 घंटे तो लेनी चाहिए. And then start your morning routine from 6 o'clock if it's the first time you're ever doing this, because 6 o'clock is not too early, not too late. It's absolute perfect for a beginner. And start it, of course, get fresh. उसके बाद exercise कर लो थोड़ी. And
एक्सरसाइज कर लो थोड़ी इज अ वेरी वेग टर्म, बट व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि स्टार्ट द डे विद समथिंग फिजिकल प्रेफरेबली। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई करके शुरू करो, उससे भी मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स मज़ा तो, तुम लिटरली कुछ भी करो मॉर्निंग में, मज़ा तो पक्का आएगा। ओके, एंड इफ यू हैव अ बिग मिशन इन योर लाइफ राइट नाउ कि मेरे 2 महीने में बोर्ड के एग्जाम्स हैं, स्टार्ट द डे विद स्टडीज। आई प्रॉमिस यू इट विल चेंज योर लाइफ। Anything that you have like extremely big in your life right now and you want to focus on that more, do it in the morning after a small morning routine कि चलो कोल्ड शावर ले लिया, थोड़ा सा कोल्ड शावर से भी डोपामिन हाई हो जाता है, एनर्जी आ जाती है बॉडी में, फ्रेश हो गए, बढ़िया मेडिटेशन कर ली 3 मिनट, इससे भी ना थोड़ी सी बॉडी मतलब स्टैंड्स में आ जाती है कि चलो अब भागते हैं। इट्स लाइक यू वार्मिंग अप बिफोर अ वर्कआउट, राइट? And that workout is your studies, it's your whatever the work that you have to do, which is very important for you right now. And if you don't have any work to do in the morning, which is extremely important to you right now, start with a physical workout, like a physical proper muscle related workout, ho sake to cardio se related, more like a hit workout. It's really good to start the day with, considering because of course you are again having a win. It could be a powerlifting workout, it could be anything, it could even be yoga, but all I need you to do is have a win, a exercise related, physical related win, because not just it's good for your health, but also because you will carry that energy forward, not just the momentum, but the energy forward that you get from it. Start the day with something physical, and once you get used to this kind of a morning routine, then you can shift it back to 5 o'clock, and a lot of people even do it till 4 o'clock. 4 o'clock करके तो मतलब एकदम एकदम यू आर लाइक एट दैट डेविड गॉगन्स काइंड ऑफ लेवल कि बस बहुत ही डिसिप्लिन, सुबह उठ के रनिंग करने जा रहे हो अंधेरे में, 4 बजे सर्दियों में उठना भाई है इतना कठिन काम। 6 बजे उठा जाता है मुझसे इतनी मुश्किल से। ऑफकोर्स उठ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उठ नहीं सकते, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट what I still suggest is कि level up slowly and slowly if you want it to become a consistent habit. तुम 2 दिन 4 बजे उठ जाओगे, बट तुम तीसरे दिन फिर नहीं उठ पाओगे। what is better is कि अगर तुम हर दिन अभी 8 बजे उठते हो, all I am saying is कि तुम कल 6 बजे उठो, 2 घंटा पहले बस उठ जाओ, अलार्म बजा उठ जाओ। डोंट लेट द थॉट्स इन योर माइंड रूल योर बॉडी। थॉट आया माइंड में, यार नहीं सोने का मन है, कोई बात नहीं, उठ जाते हैं। डोंट लेट द थॉट्स इन योर माइंड कंट्रोल यू। जैसे अलार्म बजा, अलार्म बंद करा, उठ गए। Do this for 2-3 weeks at 6 o'clock, then shift back to 5 a.m. Because 5 a.m. would be like a better time, क्योंकि let's say it's a weekday, बहुत लोगों के काम ही 8 बजे शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स। तो अगर 8 बजे स्कूल जाना है, waking up at 6 o'clock, फ्रेश होने में, नहाने धोने में 6:30 6:45 हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद barely an hour, कंसिडरिंग कि 8 बजे से पहले तुम्हें खाना भी खाना है। तो आई वुड स्टिल से कि 6 o'clock के बाद, थोड़े से टाइम के बाद, when you get used to it, shift back to 5 o'clock, because it gives you more time and more freedom to play around with and do some productive stuff in the morning. Start your day with a morning routine because it gives you that momentum to carry it all forward throughout the day. Alright? I hope this video finds the right person. Goodbye. Jai Shri Krishna.